message of health and the opinion of various specialists from different medical specialties in very different topics concerning your health since the past 2 years. During the COVID period, we had to start going on the virtual platform to bring to you the message of health. Before that, we have been conducting health awareness programs since more than past 5 years, 5 to 7 years, doing camps, health awareness lectures, programs, doing free blood tests, and giving consultations regarding diabetes, hypertension, thyroid, heart diseases, and a huge and a big spectrum of diseases. But unfortunately, with the onset of era of COVID, we had to move on to this virtual platform, and we started these webinars, the series called Illness to Wellness. And we are very thankful enough to SOCM and I especially to Sri Anil Rajput sir, who's been the backbone of uh, this this program of Illness to Wellness, which earlier, as I said, we've been conducting physically, but then we went over on this virtual mode, and we have had top specialists in the different fields of medicine, uh, especially during the COVID period, because we needed information, we needed authentic information, which was being provided through this platform. So today we are going to discuss a very important topic, that is the air pollution and smog. How does it affect our health, and what can we do to lead a better life despite this pollution? So to enlighten us, we have wonderful speakers with us today. So without further ado, I would request Sri Anil Rajputji sir to welcome our speakers and to start the official program. Sir. Thank you very much, Dr. Kesri. I'm humbled today to welcome such a distinguished panel consisting of Dr. Umesh Chandra Oja, Director, Institute of Occupational Health and Environment Research, ASIC, PGI MSR Hospital, Basidapur, New Delhi. Dr. Anurag Mahajan, Senior Consultant, Internal Medicine and Vice Chairman, Critical Care Department, PSRI. Dr. Vaibhav Shankar, Senior Consultant, Pulmonary Medicine and Sleep Medicine Department, Big Apollo Spectra Hospital, Patna. Dr. Shivanshu Raj Goyal, Consultant Respiratory Diseases and Sleep Medicine, Artemis Hospital, Gurugram. Dr. G.C. Khilnani, who needs no introduction, Chairman of PSRI, New Delhi. He looks after the pulmonary and critical care and sleep medicine there. Good afternoon and a warm welcome to the webinar on air pollution and smog, health and prevention, organized by SOCM under its Illness to Wellness campaign. It gives me immense pleasure to share that since the inception of this campaign, it has received an enthusiastic support of doctors and health professionals from across the country and overseas. They have generated large-scale awareness on several health-related issues, provided the much-needed guidance on managing conditions arising from numerous diseases, and also the preventive steps that can be taken to lead a happy and healthy life. They are the reason behind the success of Illness to Wellness campaign. I thank them and look forward to their continued patronage. In the recent times, humankind has made significant all-round development. While we have made substantial achievements in several areas, in all this, we have perhaps forgotten that our health is intricately connected with that of the environment. A number of specific environment issues can affect our planet. While they have direct bearing on Earth's
soil, water, and air, such issues can impede human health and wellness as well. Air quality is one such environmental factor that is closely linked to the Earth's climate and ecosystem globally. Over the years, poor quality or air pollution has been a constant and deeply concerning matter. From smog hanging over cities to smoke inside the home, air pollution poses a major threat to health, resulting increase in mortality and morbidity. WHO data shows that almost all of global pollution breathes air that exceed WHO guideline limits and contain high level of pollutants, with low and middle income countries suffering from the highest exposures. It is further stated that the combined effect of ambient air pollution and household air pollution is associated with 7 million premature deaths annually. Air pollution in India is also a very serious issue. As per World Air Quality Report this year, out of 50 global cities with toxic air, 35 are located in India. A recent study by Lancet shared that air pollution is one of the main factors affecting respiratory ailments and associated infections, and is the second major risk factor causing disease burden in India after malnutrition. The global burden of disease study in 2019 also estimated that 18% deaths that year in India were attributable to pollution of the air. Among air pollutant, it is growing incidence of PM 2.5 that is the most damaging, with a diameter of 1/13 and the width of human hair. It arises from many sources, including dust. These small particulates, which when inhaled can mix in the bloodstream, affecting the cardiovascular respiratory system, along with compromising a host of other bodily functions. While short-term exposure to air pollutant is closely related to COPD, cough, shortness of breath, wheezing, and irritation in the eyes and respiratory tract, the long-term effects are chronic asthma, pulmonary insufficiency, along with other cardiovascular diseases. With the health effects of air pollution serious and far-reaching, action to reduce this bane must be innovative and efficient. With several, with several measures for air quality management in the country, such as developing national clean air program with air pollution reducing targets, augmenting air quality monitoring network, strengthening vehicular and industrial emission standards, expanding renewable energy, promoting electric vehicle, and supplying LPG cooking fuel to millions of households have been taken by the government to improve the air quality. The onus thus lies with each one of us to take necessary action to reduce these hazardous conditions. Measures such as public transport or carpooling, lowering consumption of electricity, recycling, reusing products, and encouraging afforestation will help us and our future generation to breathe clean air. Importantly, consuming a diet of nutritious foods, especially foods such as jaggery, walnuts, fatty fish, apples, beetroot, turmeric, pumpkin, and broccoli that have been identified to be particularly beneficial is a smart way to support and protect your lung health. Habits of wearing masks while stepping out and exercising indoor with the air quality is bad should be also followed.
This, along with practicing simple breathing exercise and pranayam, will be helpful for one's lung and protect it from the detrimental effect of pollution. There is no doubt today that air pollution is a global public health emergency, and therefore no regret strategy containing all possible preventive measures is imperative. We are indeed privileged to have with us today eminent doctors and specialists on this subject, and we are eagerly awaiting to hear their proficient views and guidance on this significant and currently relevant topic. I welcome them once again and look forward to an enriching discussion. I wish this webinar a great success. Thank you and Jai Hind. Back to you, Dr. Kesri. Thank you so much, sir. Thank you so much for this elaborate introduction. And you have, in few words, actually outlined today's discussion that we are going to carry forward. I think first we are going to discuss some hidden aspects of pollution that are there, but probably we don't realize because we talk a lot about allergies, about respiratory disease, which we definitely are going to discuss. But as well as these, we are also going to discuss some hidden aspects which probably we don't realize, and then we are definitely going to discuss ways to protect ourselves because probably it is not possible for us to remove the pollution from around us. You can't change your city, you can't change your environment overnight, but maybe we can do something about it. I think these are some burning questions there with me, and I'm sure all of our audience is also eager to listen to answers to these questions. And we are very thankful to Dr. Khilani sir, who has joined us despite his such a busy schedule. So welcome once again, sir. I'd like to start today's conversation with you, sir. Okay. Have you seen any change in past 2-3 years in the respiratory diseases which are coming to you in patients with respiratory disease during the winter months? Have things changed for better or worse? Because you've been our honorable guest since past 2 years already, and we have spoken about environmental pollution in these programs. So have you noticed any change since past 2-3 years, sir? So thank you, Dr. Kesari. Thank you, Dr. Mr. Anil Rajput, for bringing me here once again. And you are a very senior physician of this city. And I will take you to 2016 and 17 Diwali time. At that time, there was no ban on crackers. And Diwali was celebrated with all fanfare. And if you would recollect, the sky used to be absolutely dark. And then PM 2.5, which we are crying at 200, used to touch 1200. And I distinctly remember I was coming on an aircraft at 11 o'clock in the morning. And it was like was in the dark night because of the. Very true. Now, that's the time when that 1 month, that one person, whosoever came from, especially from outside, his throat will become sore, he'll start coughing, and his eye will start smarting, his skin will be itching. And if I go little backwards, almost 20-25 years back, at that time when we conducted a study at the All India Institute of Medical Sciences under leadership of Dr. Pandey, and I was one of the members of that study, there was 25% increase in heart attacks, COPD and asthma cases in the emergency in response to the air pollution. So we have come a long way. We are nowhere near ideal, I would say. And then we also saw COVID when they were locked down and you could see a blue sky as if you were in California. We had such a devastation of COVID that we didn't realize that the pollution was there or not there because there were so many admissions, oxygen, and so on and so forth. So the air quality has improved significantly, I would say, if I compare it to
pre-2018 time, because I have been living through it and I have all the data with me. But we are far from ideal, in the sense that those days it was very common advice from chest physicians or physicians, and I used to do that all my asthmatic patients and COPD patients, I used to advise them that whosoever can afford, please leave this city for 10-15 days to a cleaner area and spend some time. That is not there. But having said that, what has made change? The change has come mainly from introduction of CNG, metro coming in. All small scale industry is being driven away with the order of honorable court, and part of this came because of the Dr. Pandey's study, of which the honorable court had taken cognizance and ordered that. But the current situation is that we are having AQI of very poor or poor quality, majority of time. Sometimes we are in hazardous. And to make things more clearer, the WHO has further brought down the ambient air quality standards. You must have seen that about 4-5 months. And I happen to be member of the WHO expert committee on global effects of air pollution, and we keep meeting every month or once in 2 months and discuss all these things and come out with the recommendation. So they have further reduced the air quality standards, while we are still much beyond the anywhere near close. But there's nothing to be very pessimistic about, that only Delhi or India is 90% of the world population does not live in a healthy air area, unfortunately. So it's a global problem. Only 10% of the world population lives in the ambient air quality which is acceptable or within limits. But long way to go, as Mr. Rajput has already almost gave a summary of this webinar and actually gave causes as well as remedy of it. So we'll discuss the health aspects of it as we go forward. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'd move to you, Dr. Mahajan, sir. So tell us, how does this pollution affect the child right in the womb? Yeah, And now, what could be the consequences? Because this is where the life starts from. yeah, now there are definitive studies which do mention about the effect of this air pollution even on the outcome of the pregnancy. And there are definitively good evidence to suggest that the mothers who are exposed to long-term such pollution, they have low birth weight babies, intrauterine growth retardation, and sometimes even loss. But IUGR and low birth weight are very common. So definitively it is associated with that. Whether it causes an immediate effect at the time of conception is not very definitive, but yes, it will all depend on whether the mother who has been there has been exposed to a lot of pollution, and then there may be some genetic mutations which could also alter the outcome of a pregnancy or the fetus that is being conceived. That is how I would like to see that. Thank you. Thank you, sir. Dr. Oja, sir, I'd like to move over to you. These days we talk a lot about non-communicable diseases. And we understand that pollution has a very important role to play in the causation or maybe aggravation of such disease, as Rajput sir was already mentioning about the death rates and the increase in death rate due to the air pollution. So do you see any correlation, any interplay of these diseases and air pollution as such? And I would request every one of you, if you can, to contribute to this, because I think this is an extremely important topic. At the outset,
My compliments and thanks to SHM and all the organizers who has given me this opportunity to talk to you all. See, it's really wonderful to share the chair with one of my guru, Professor Khilnani. He has rightly pointed out everything in detail, along with Mr. Rajput, who has summarily covered everything. But being from ESIC, where we are looking after industrial workers, what we see is not only the air pollution in general, along with it, the ambient air in the working atmosphere of a worker. When the pollution is beyond that too, which has been reported, the air, ambient air in the breathing zone is hurting a lot to our workers. And see, more than 10% of industrial workers are with us in organized sector. Unorganized sectors, n number of people are there. So yes, whenever we do these surveys, our hypertension, non-communicable disease, as you have rightly pointed out, is probably going to increase, but I do not have any data to substantiate that. We have to do the study to prove or disprove this. Thank you. So, Khilnani sir, would you like to say something also? Sorry, you can you repeat your question? So I would request you to throw a little bit light on the interplay of the common non-communicable diseases like hypertension, coronary artery disease, diabetes, dyslipidemia, and air pollution, because I want our viewers to understand that there's a link and how things are getting worse. So, okay. So, can I elaborate on the constituents of air pollution? Yes, sir, please. So there are the main air pollutants are PM2.5, Mr. Rajput said, and I'll elaborate on that. There's a nitric oxide, sulfur dioxide, there is carbon monoxide, and lead is of course not there because lead is taken off the fuel. So talking about PM2.5, PM2.5 is not a one pollutant. It is the size of the particles which are formed by a complex reaction of various substances, like it could be a diesel emission, it could be a petrol emission, it could be a burning of fossil fuel, it could be of industries. Why we say PM2.5? Because PM2.5 is the particles smaller than that. They penetrate our airways, go into the lowest part of the lung, where gas exchange takes place. Previously, the emphasis was on PM10. PM10 because it was easy to measure, and PM10 would actually penetrate the nasal mucosa and go into the respiratory tract, but it's actually the PM2.5 which goes into the lowest part of the lung, which is called alveoli, where the gas exchange takes place. And this PM2.5 will cause cough, it will cause bronchitis, it will cause all kinds of I think we've lost connection with Khilnani sir. So, since we were talking about bronchitis here, maybe and one of the respiratory specialists would like to. Sir. Yes, sir. Sir, please unmute yourself. how it happened. So we had lost connection for a few minutes, for a few moments rather. So I don't know where I was when that. On bronchitis. So PM2.5 will go into the lower respiratory tract and lowest part of the lung, that is alveoli. And PM10 will cross the nasal mucosa and go into the respiratory system. Now PM2.5 is not one. It depends upon the source of 2.5. Like PM2.5 of say diesel or kerosene will contain polyaromatic hydrocarbons, which are responsible for causation of lung cancer, which is number one cause of death all over the world. PM2.5 from the
burning of fossil fuels will contain more of a sulfur dioxide and nitric oxide, which is more responsible for causing chronic bronchitis. Now I'm coming to your question. Now, what is not measured routinely is ultrafine particulate matter. Ultrafine particulate matters are the particles which are of the size of less than 0.1 micron. Now, these are the particles which from the alveoli or the lowest part of the lung penetrate into the bloodstream. These will go to all over the body. They will go to the brain. They will go to the kidney. They will go to the gastrointestinal tract. They will go to the heart. And these are the ones who are responsible for non-communicable mainly. Besides that, nitric oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide also partly would penetrate, but ultrafine particulate matter is the one which is not measured routinely by the any agency except for the research purpose. Now this leads to in the heart, along with the carbon monoxide, it causes coronary heart disease, which is very common. It is also associated with hypertension, which is also very common. There is solid, robust evidence about that. If you talk about the brain, it causes stroke. It is also associated with cognitive dysfunction, what we call as dementia. And nobody should think that urinary tract or gastrointestinal tract is not affected by these pollutants. So all the including partly diabetes, but there's no robust evidence about diabetes. But all these other things which I am talking about are definitely affected by air pollutants. So as far as the non-communicable diseases and even the COPD, which is the third leading cause of death all over the world, is definitely caused by air pollution, and it is, I would say, as important as tobacco smoking, which is number one cause of COPD, along with exacerbation of asthma. Besides that, if you talk about evidence, if I could touch upon even cataract for that matter, is associated with air pollution. Male infertility is also associated with, even our quality of sperm and sperm count is also affected by air pollution. So nobody should go with an idea that air pollution affects only the asthma, or it causes only cough, or it causes only sore throat. Our quality of life as well as quantity of life, both are affected by air pollution, and it definitely there's evidence that. And if you talk about India, 2015-16 studies, global studies had shown that there are 10 lakh excess deaths every year due to outdoor air pollution, and more than 10 lakh deaths every year and due to indoor air pollution. So it's not only the deaths. Those who die of air pollution related diseases are suffering. They have sickness. The quality of life goes down, including our quality of sleep also. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। संक्षिप्त में अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर खिलानी सर ने अभी जो बताया है कि जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो एयर पोल्यूशन की वजह से इसमें नुकसान ना पहुंचता हो। ऐसी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक जिससे लकवा मार जाता है, आंखों की बीमारियां, कैटरैक्ट, पेट की बीमारियां, बांझपन, ये सब बीमारियां काफी हद तक एयर पोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं। एयर पोल्यूशन इसकी वजह है, और ये अनुसंधान से ये जांच करके ये बताया जा चुका है। तो एयर पोल्यूशन हमारी जिंदगी का इतना अहम पहलू है, शायद ही हमें इसके बारे में इतनी जानकारी आज से पहले थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद खिलानी सर, आपने ये जागरूकता हमारे बीच फैलाई। सो डॉक्टर शिवांशु, नेक्स्ट ओवर टू यू। Is there any relation between allergies? Because allergies are very common, especially in children.
छींक बहुत आती है, खांसी आती है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, दाने निकल जाते हैं. सो इसका भी एयर पोल्यूशन से कोई संबंध है? इज देयर एनी रिलेशनशिप? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, डॉक्टर शिवांशु. Hello. Yeah, good evening to everybody, and thank you, Dr. Kesri, for having me on this panel. Uh, no, absolutely. I'll take it further from whatever Dr. Khilnani has said and Dr. Oja has said. Air pollution is something which can affect every part of our body, and allergies are absolutely aggravated. It's not important that we develop allergies, but people who have got tendency for allergy right from their childhood, they suffer with every season. For example, we are living in Delhi NCR. We do not have a good season or a bad season. We hardly see any good season. So everybody is suffering right from the childhood, from the first breath, a kid is born. We expose them to the kind of air they are breathing. If I can give you a small figure, almost like when we measure the AQI level, all there is a rough dictum, a 22 of AQI is equal to one cigarette smoked. So imagine the amount of cigarettes every one of us, even a small child, is smoking in a single day for the kind of air which we are breathing. The kind of allergies what you asked me, allergic rhinitis, running nose, burning of the eyes, redness of the eyes, sinusitis, all these things developing into and following with a post-nasal drip, going into bronchitis, it's all a very, very common finding. Allergies not being limited only to the nasal passages or the respiratory tract, allergies of the skin, people developing skin problems. Everything can be linked to one or the other part of the pollution, whether it could be the particulate matter or it could be the gaseous matter. So I don't see that, as Dr. Khilani rightly pointed out, that it is any organ in the body which is spared from the ill effects of pollution, whether it is the GI system, fertility system, respiratory, just because we breathe, everybody thinks it is the most common thing. Thank you. Thank you so much. I think, as I said initially, we'll break this into two parts. One is we'll first of all try to understand what is being caused due to pollution. I think we very well understood. आप कुछ कहना चाहते थे डॉक्टर ओझा सर? मैं हाँ. एक लाइन खाली बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति एक दिन में 24 घंटे में करीब 20,000 लीटर हवा को ग्रहण करता है, छोड़ता है. अब यदि उसकी वो प्रदूषित होगा वो, तो उसके अंदर जो परागकण वगैरह है वो ज्यादा अमाउंट में अंदर जाएंगे चिपक करके उससे, सो एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है इससे. मैं जागरूकता के लिए बताना चाहूंगा सबके लिए. जी जी. डॉक्टर खिलानी सर, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द इंडोर पोल्यूशन. और खासतौर पे हमारे देशों में अभी भी कई जगह गांव में लकड़ी और कोयला जला के खाना बनाया जाता है. सो उसके क्या दुरअसर हो सकते हैं? जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, उपला जलता है, लकड़ी जलती है, कागज जलते हैं, कुछ भी बाहर से लाके जो है ना वो जला लिया जाता है. जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है हमारा, उस वजह से स्पेशली जो ठंड के दिनों में, जो आजकल के समय पे जो भी किचन में या रसोई में काम करती है महिला, तो जनरली खिड़कियां बंद कर देते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है. और क्योंकि फिर जब खिड़कियां बंद कर देते हैं तो वही धुआं पूरे घर में भी फैलता है. और ये देखा गया है कि खांसी उनको होती है, जैसे आग जलाते हैं, कागज जलाते हैं, उनको खांसी होती है, पर उनको आदत सी पड़ जाती है. उसमें PM 2.5 लेवल जो होता है वो हम कहते हैं 200 बहुत ज्यादा है. तो जो रिसर्च हुई है वो जो रसोई में जो आग जलाई जाती है उसमें 30,000 तक पहुंच जाता है. 30,000. तो ये उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है. तो उसमें जो है जो सबसे कॉमन जो होता है, जो हमारे पास जो लेडीज आती हैं, क्योंकि मैंने एम्स में 30 साल काम किया और इस डिपार्टमेंट में, तो पहले ये जो धारणा होती थी जब हम पढ़ रहे थे कि COPD का मतलब स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करता है उसको COPD हो सकता है.
स्मोकिंग नहीं करता है उससे पूछते भी नहीं थे हम COPD। लेकिन अब ये है कि जो महिलाएं आती हैं जो मिडिल एजेड या जो अब 80 साल की हैं, जो हाई कार में बैठ के आती हैं, बट वो 50 साल पहले चूल्हा जलाया करते थे, तो वो उनको सबसे जो कॉमन बीमारी जो दिखती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब उनको खांसी हो जाना जो COPD में आगे तब्दील हो जाती है। लेकिन एक दूसरा जो हमने नोटिस किया है पिछले दिनों में, लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो भी यही माना जाता है कि 90% लंग कैंसर जो है ना वो स्मोकर्स में होता है। और हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उनको पढ़ाया जाता है कि आपको लंग कैंसर सस्पेक्ट करना है तो सबसे पहले स्मोकिंग की हिस्ट्री लें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर्स में बहुत हो रहा है और लेडीज में भी बहुत हो रहा है और यंगर एज में हो रहा है। तो अब ये जो मैंने बताया कि केरोसिन का जो एमिशन होता है वो डीजल एमिशन के जैसा ही होता है, केमिकली पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और केरोसिन भी जलाया जाता है इंडोर एयर पॉल्यूशन में। तो इसका जो इंडोर एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से और एस्थमा एक्सेसरबेशन से, लेकिन लंग कैंसर भी बहुत करता है उससे। तो ये इसका भी प्रमाण है हमारे पास। और गौतमवाला में स्टडीज हुई थी जिसमें फैमिलीज को उन्होंने स्टोव दिए थे, गैस स्टोव दिए थे फ्री, और वो उस स्टडी का नतीजा में यहाँ बताना ठीक नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं है। लेकिन ये समझना है कि जब 30,000 PM2.5 पहुंच जाता है तो लंग्स का क्या हाल होता होगा। तो इसलिए जो है जो ये उज्ज्वला योजना हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू करी है, एक लैंडमार्क है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि ये सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ब्लड में भी जाती है। और ये आप भी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोरोनरी हार्ट डिजीज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब जो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल से कोरिलेटेड होता है। और वो मैंने जो बाकी सब जो बताया कि ब्रेन की डिजीज वो सब इससे भी रिलेटेड होते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है ना वो इजीली मैनेजेबल है। एक दूसरा पहलू होता है इंडोर एयर पोल्यूशन का, वो होता है क्लोज बिल्डिंग सिंड्रोम, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में 100 मंजिल की इमारत होती है, उसमें खिड़कियां खोलने की कोई सुविधा भी नहीं होती क्योंकि सारे घर एयर कंडीशन होते हैं, अंदर कारपेट्स लगे हुए होते हैं और कारपेट्स की कितनी उसमें फिर जो एस्थमा की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम सोचते हैं कि इंडिया में पॉल्यूशन है तो एस्थमा हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन अगर इंसिडेंस की बात करें तो क्लीनेस्ट ऑफ द एरिया लाइक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ एस्थमा बहुत ज्यादा होता है, पॉलेंस की वजह से होता है, हाइजीन हाइपोथेसिस होती है। और इंडोर एयर पॉल्यूशन जिसमें माइट्स और एलर्जेंस बहुत होते हैं वो दूसरी तरह का इंडोर एयर पॉल्यूशन। एक तो फॉसिल फ्यूल जो चूल्हे वगैरह जलाने से होता है वो पॉल्यूशन है, वो जो क्लोज बिल्डिंग वाला जो पॉल्यूशन है, और जो इंडोर स्मोकिंग, अब जिसका घर में खिड़की ना हो और वो अगर स्मोकिंग करेगा तो उसका तो कहाँ जाएगा, वो वहीं रहेगा। और जो एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है वो उस इंडोर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रमाण है कि 10 लाख डेथ्स हो गए हैं हर साल इंडिया में इंडोर एयर पॉल्यूशन से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हेल्थ जो है इंडोर पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और अब सर्दियों में स्पेशली इन दिनों मुझे एक मौका मिला था करीब 25-30 साल पहले कारगिल जाने का किसी ऑफिशियल सिलसिले में। वहां पर 11 बजे के बाद बिजली चली जाती थी, होती नहीं थी पूरे कारगिल शहर में। तो सब लोग वहां पर रात को आग जलाते के सोते थे, तो वो खिड़की तो नहीं खोलेंगे अगर कमरा गर्म करने के लिए। तो हमने वो हेल्थ मेला किया था 3 दिन का, सबको ब्रोंकाइटिस थी, सबको। ये मतलब ये डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन हमने वहाँ बहुत बुरा हाल देखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खिड़की खोलना, एग्जॉस्ट चलाना और क्लीन फ्यूल यूज करना कुकिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आपने सर प्लीज। हम लोग अपनी ओपीडी में बैठे होते हैं आजकल,
और अचानक हम देखते हैं कुछ मरीजों की संख्या बढ़ रही है सांस की। एक पॉल्यूशन तो जो जैसे सर ने बताया वो है। दूसरा क्या होता है, सब अपने पुराने रजाई गद्दे सब निकाल रहे होते हैं और उसको सिर्फ धूप में दिखाया और उड़ना शुरू कर दिया और अगले दिन ही छींकते हुए खांसते हुए पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफी स्पोर्स काफी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर भरे होते हैं। तो हम कितनी बार भी उनको दवाइयां देते रहे, वो मरीज ठीक नहीं होते। लेकिन एक तरीका खाली से सिंपल कि अपने कंबल को कृपया धो दें, धूप में सुखाएं, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करें, तो काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये मैं वर्कर्स में अक्सर देख रहा हूँ इन चीजों को। जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। सर हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं डॉक्टर महाजन सर थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे श्रोताओं को नहीं पता कि डस्ट माइट, ये एलर्जन क्या होते हैं, जो थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे। कॉकरोच, डैंडर वगैरह ये सब चीज़ें जो एलर्जन है और इस समय जो ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, जो हमारे घरों में होते हैं। जी बिल्कुल। आमतौर पर एलर्जेंस तो हम लोग सिर्फ शायद उन्हीं को मानते हैं कि भाई बहुत पॉलन हो गया या बहुत डस्ट हो गया, इन्हीं को माना जाता है। पर खासकर जहाँ जितने छोटे घर, जितने बंद कमरे, वहां पर उतने ही ज्यादा इस प्रकार के कीड़े मकोड़े और रहते हैं, जिनके अपने जो उनकी स्किन की है या उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़े एलर्जेंस होते हैं। और जितनी बंद जगह, जैसी बंद जगह, वो वहीं उतना ज्यादा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर जाता है। और ये समय होता है जब हम लोग इन बंद चीजों को खोल के अपने इस प्रकार की रजाई, गद्दे, चादरें बाहर निकालते हैं मोटी वाली, ताकि ओढ़ सकें। तो ये फिर सब उनके साथ बाहर निकल के आते हैं। अगर हम अपना बचपन याद करें, खासकर हम लोग जो 50+ हो चुके हैं, तो ये एक नियम था कि कम से कम हफ्ता भर पहले कपड़े, गर्म कपड़े बाहर निकल के धूप में रखे जाते थे। ये एक तकरीबन सा नियम था, जो आजकल के समय में लोगों के पास समय का अभाव बोल लीजिए, या उतनी कई जगह तो धूप का ही अभाव बोल लीजिए, कि हम लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। और अगर हम समाज के उस तबके की बात करें जिनके पास सुविधाओं की रिलेटिवली कमी है, तो वो लोगों के पास ना समय है ना सुविधा है, तो तुरंत ही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर ओझा ने कहा, शुरुआत हुई नहीं कि मरीज बीमार होने लगा और एक नहीं, घर में 4 लोग होंगे और फिर ये कहा जाएगा कि वायरल हो गया है, एक से दूसरे को हुआ है। वो वायरल ठीक नहीं होता। वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो भी चीज है, और जैसे अभी डॉक्टर खिलानी सर ने कहा, सब कुछ बंद हो जाता है। सर्दी है, सुविधा कम है, सबसे आसान काम है दरवाजे खिड़की बंद कर लिए जाए, तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने के लिए तो आपको चीजें खोलनी पड़ेंगी, आपको हवा एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, डर हमें ये लगता है कि बाहर से गंदी हवा आ जाएगी, पर हमारे घर की हवा कितनी गंदी है उसके एक्यूआई तो नापा नहीं जाता है। तो इसलिए प्रोबेबली वी एंड अप मल्टीप्लाइंग नॉट जस्ट द एक्यूआई, बट जो ये डस्ट माइट्स और इस तरीके की ड्रॉपिंग्स हैं, और इसके चलते बहुत ज्यादा एलर्जिक टेंडेंसीज डेवलप होती है, वेदर इट इज द रेस्पिरेटरी एलर्जी और द स्किन एलर्जी। एंड दैट इज व्हाई ये सीजन है जब सबसे अधिक इन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट, चाहे फिजिशियन हो चाहे रेस्पिरेटरी फिजिशियन हो, उनके पास पहुंचते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे, हाँ प्लीज आप बोलिए। नहीं नहीं, ठीक है, आप बोलिए। मैं ऐड करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे सर्दियों में हम लोग दरियाँ बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, और ये डस्ट माइट और इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं, उनके डैंडर ये कालीन में जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर सारी सर्दी भर जिसको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, उनको खांसी होती रहती है, छींक आती रहती है, और अक्सर ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये बीमारी आ कहाँ से रही है। और वो सीजन भर दवाइयाँ खाते हैं, एलर्जी की दवाई खाते हैं, तरह तरह के इलाज करते हैं, लेकिन कभी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो बीमारी तो उनके घर में, उनके पाँव के नीचे है। डॉक्टर शिवांशु, आप कुछ बोल रहे थे, आई थिंक यू रेज योर हैंड। Yeah, yes. I wanted to add 2 points here. When we talk about indoor pollution, as sir rightly said, we close our doors, windows, and people smoke. There's something very important which what not many people know. There's something called a third hand smoking. What happens that you smoke in an environment and you know that there's nobody sitting around you, so you feel everything is okay and you move out, but this smoke gets deposited on your furniture, on your sofas, on your beds, on your curtains. If your family members are living in the same room, subsequently they're going to get exposed to the same ill effects of smoking what you have been exposed yourself. So that's called third hand smoking. That means nobody is smoking in front of you, but still you are getting exposed to the kind of smoke effects.
So there's a very common line in English that if you smoke in a house, your house smokes back at you. So this is something which we always have to keep in mind. First of all, the kind of environment which we are living in Delhi NCR, we should never indulge in smoking. But smoking indoors cannot be imagined to the amount of damage it is creating to each of us. Definitely, that was an eye opener for all of us. Thank you so much. तो कितना अच्छा मौसम है, धूप भी निकलती है और इतने तरह तरह के फूल खिल रहे हैं कि आजकल तो हर व्यक्ति पार्क में जाना चाहता है। बट सर, जैसे कि मैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट हर मरीज को बोलता हूँ कि आप रोज पौना घंटा 1 घंटा कम से कम चलें, टहलें, एक्सरसाइज करें। और अभी राजपूत सर ने भी बोला प्राणायाम के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो खिलानी सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर बीमारियां जिनकी वजह से अभी हमारी जिंदगी खराब हो रही है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, सबका एक निदान हम बोलते हैं एक्सरसाइज और वॉक। आप भी ये बोलते हैं, तो अब ये कहाँ करें, कैसे करें? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो है ना, तो मैं आपको जो है ना प्रमाण और जो जमीनी सिचुएशन है दोनों बताता हूँ। प्रमाण तो ये है कि एक स्टडी हुई थी, बहुत लैंडमार्क स्टडी है, जहाँ 60 साल से बड़े लोगों को, ये इंग्लैंड में लंदन में स्टडी हुई थी। उसमें उन लोगों को 2 घंटे तक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वॉक कराया गया। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आपको पता है, वहां पर कार्स अलाउड नहीं होती, बसेस सिर्फ चलती हैं, तो और डीजल एमिशन बहुत ज्यादा होता है। और उनका पहले लंग फंक्शंस किए गए बिफोर स्टार्टिंग टू वॉक, और उसके बाद 2 घंटे बाद उनका लंग फंक्शन फिर रिपीट किया गया, और उनका ब्लड टेस्ट किया गया फॉर इन्फ्लामेटरी मार्कर, जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। उन्हीं लोगों को कुछ समय बाद हाइड पार्क में 2 घंटे के लिए वॉक कराया गया, और फिर उनके बिफोर एंड आफ्टर वॉक उनको टेस्ट किया गया। तो ये देखा गया है कि 2 घंटे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक करने के बाद उनका जो लंग फंक्शन थे, जो FEV1 होता है पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट, वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। और देयर वाज इंक्रीज और इन द इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, जो होते हैं, जो हमारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर मार्कर्स होते हैं लंग के, वो बढ़ गया। जबकि हाइड पार्क में जिन्होंने वॉक किया उनका लंग फंक्शन ऑल्टर नहीं, जिनके जो लंग फंक्शन थे वो नॉर्मल थे और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी नहीं बढ़े। तो इस बेसिस पे WHO की मीटिंग हुई थी करीब 3.5 साल पहले। आई वाज देयर विद देम। ये स्टडी वहाँ कोट भी करी गई थी, और ये कहा गया कि जहाँ भी एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर एक्सरसाइज करने से आपको नुकसान होता है। वो इसलिए होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जब वॉक करते हो तो कितनी हवा लेते हो, मतलब 300 से 350 से 500 ml एक सांस में, फिर आप 15-20 बार सांस लेते हो, तो उसको मल्टीप्लाई करके खूब सारे लीटर्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो, स्पेशली अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, तो आप 4 से 5 गुना एयर की वॉल्यूम आप ज्यादा जाता है। एक तो ये बात। दूसरा, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे आपका मुंह खुल जाता है, दैट इज वेरी नेचुरल। तो आपका जो नेजल फिल्टर होता है वो बाईपास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4-5 गुना ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं। तो मैं ये आप भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह के टाइम पर जब स्मॉग होती है, जो आपका ये टॉपिक है आज का स्मॉग, वो आपने इसलिए रखा है कि फॉग प्लस एयर पोल्यूशन के मिश्रण से स्मॉग बनता है। सिर्फ फॉग से नहीं, फॉग और एयर पोल्यूशन से मिलते हैं तो स्मॉग बनता है। तो जब स्मॉग हो उस समय एक्सरसाइज करने से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है और आपको फैसिलिटी है, तो वो स्मॉग के टाइम पर वॉक नहीं करें। आपको वॉक तब करना है जब धूप निकल आए। जब धूप निकलती है तो देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ
एयर पोल्यूटेंट जो सरफेस पे होते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, वो अपने आप उठ के ऊपर चले जाते हैं। दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। तो जो सरफेस पे जो एयर पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, दैट इज द टाइम जो रिटायर्ड लोग हैं, जो मतलब आप मैं नहीं कर सकते क्योंकि हमें काम पे जाना होता है, तो वो लोग जो है उस समय वॉक किया करें जब हैजार्डस हो, AQI 400 450 जो भी हमारे, उस समय तो वॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, घर में आप जिम में जाना चाहें, उसकी कोई मनाही नहीं है, वो करना चाहिए। धन्यवाद। तो कुछ आजकल बहुत हम सुन रहे हैं कि यंग एज में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली फिट थे, फिटनेस में लगे रहते थे। सो कुड एयर पोल्यूशन बी कंट्रीब्यूटिंग टू दैट आल्सो? डेफिनेटली जो एयर पॉल्यूशन है वो हार्ट अटैक ज्यादा करता है, लेकिन इस समय तो एक और भी ऑब्जर्वेशन कह लो या थियरी कह लो या कह लो कि बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि मेरा मानना है कि 90% से ज्यादा लोगों को इंडिया में कोविड हो चुका है, कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या भी। है? समझा नहीं। कोविड कोविड। ओके। कोविड 90% से ज्यादा लोगों को कोविड हो चुका है। और ये कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो कोविड होती है, ये प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट होती है, और जो लॉन्ग कोविड होता है उसमें थक्का यानी कि थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं, कि जो करंटली जो हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं वो उसमें शायद उसका कंट्रीब्यूशन है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सच है कि एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग दोनों एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोविड के टाइम पर एक चीज मैं बताना जो भूल गया, जो जो एविडेंस हमारे पास था कि नॉर्थ और साउथ इटली हाँ। एक ही देश के थे, तो कोविड टाइम पर नॉर्थ इटली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउथ इटली, तो वहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा था। और जर्मनी में जहां जहां नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 100 से ज्यादा था, वहां मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है लंग इन्वॉल्वमेंट और मोर्टेलिटी के साथ। So is this only related to COVID की और infectious diseases जैसे all tuberculosis? all infection, all viral infection, all pneumonias will be worsened wherever there is a एयर पोल्यूशन। और ये एक्चुअली आपको इतिहास में ले जाऊं तो जो लंदन फॉग था 1950 का, उसमें ऐसे नहीं हुआ था कि आज पॉल्यूशन हो गया तो लोग मर गए, ऐसे नहीं था। देयर वर 4000 एक्सेस डेथ्स ऑन दैट टाइम। उस समय वो लंदन में जो है ना, ये कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता था। तो जब फॉग आई, जो हमारा टॉपिक है स्मॉग, फॉग और स्मॉग, वही जब लंदन फॉग जिसको कहा जाता है, उसमें 4000 एक्सेस डेथ उनकी हुई थी जिनको के एक्सेस डेथ वर बिकॉज ऑफ देयर को एग्जिस्टिंग बीमारी। पॉल्यूशन से डेथ नहीं हुई थी, पर किसी को निमोनिया, किसी को हार्ट अटैक, किसी को क्या हुआ, तो डेथ एक्सेस डेथ्स हुई। तो कोविड में भी ये एक्सेस डेथ्स होती हैं किसी भी निमोनिया में, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो उसका आउटकम वर्स होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई ओपनर। डॉक्टर उमेश सर, आप बताइए कि एयर कंडीशनर की मदद से क्या इंडोर पोल्यूशन से जा सकता है? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन एंड क्लीनलीनेस? I do not have any data to suggest that. I'm sorry, but theoretically, yes, because it circulates the air and there are filters available in it. But I do not have any data to suggest it, sir. So you mean air purifier or air conditioner? अभी तो I'm talking about air conditioner. Conditioner. So, but conditioner with filters may or may not. I do not have any data to suggest, sir. Probably Professor Kamani will be able to answer this. So anyone else would डॉक्टर खिलनानी सर, एयर कंडीशनर से कोई फर्क पड़ता है एयर क्वालिटी पे, इंडोर एयर क्वालिटी पे?
नहीं, इंडोर एयर क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। अगर एस्थमा की बात करें तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन फॉर सिवियर एस्थमेटिक pollen allergy, they are advised to remain in a closed environment. Yes, in Uh, severe I asthma, think- yes, they have been recommended that they should remain in the closed atmosphere so that they are cut off from the atmosphere. Yeah. Professor Gilani, sir. Are you there? Yes, yes. So unmute yourself, sir. Khilani sir, please unmute कर लीजिए sir. So, was I audible when I said about air conditioner? नहीं, no sir. So the air conditioners have nothing to do with improving the air quality, but those who are severely asthmatic and have allergic to pollens, they are in our literature are advised to remain indoor in an air conditioned environment. Having said that, if you are using air purifier in your room, then it is mandatory to use air conditioning environment and close the window, especially if it is winter or summer. तो एयर प्यूरिफायर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनका क्या एप्लीकेशन है और उसका यूज है कि नहीं है, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? हाँ, तो एयर प्यूरिफायर के दो कंपोनेंट्स होते हैं सर। एक होता है फिल्टर which filters the 2.5 PM 2.5, and there's another component called adsorbitant, not absorbitant, adsorbitant, which absorbs the air gases like nitric oxide, sulfur dioxide, which will not be stopped by the filter per se, and carbon monoxide for that matter. So when you procure an air purifier, it is important to procure an air purifier which has got both filter as well as adsorbitant. The third thing is that the potency of the air purifier should be commensurate with the volume of the room. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका हॉल तो बहुत बड़ा है, हालांकि ज्यादा नहीं होते अब शहर में, लेकिन ये आपने लिविंग रूम में एक एयर प्यूरिफायर उठा के रख दिया और सोचा मेरा घर प्यूरिफाई हो गया, ऐसे नहीं होता। उसका साइज और पोटेंसी जो है वो रूम के वॉल्यूम के कोरोबोरेटिंग होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर बार बार आपके लिए चाय पानी खाना आ रहा है और दरवाजा खुल रहा है, तो एयर प्यूरिफायर का कोई वैल्यू नहीं होती। और एयर कंडीशनिंग जैसे गर्मी हो या सर्दी हो, हीटिंग कुछ जरूरी होगी तभी आप उसकी। सबसे लास्ट में जो डिस्टर्बिंग बात है कि जो मैं रेफर करता हूँ कि 3 साल पहले जो जिनेवा में मीटिंग हुई थी प्री कोविड टाइम में, इसमें मैं भी गया था एज एन एक्सपर्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल गॉट कलेक्टेड, they very firmly said that there is no scientific evidence एयर प्यूरिफायर से कोई हेल्थ बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो मेरी मतलब पर्सनल थॉट प्रोसेस है, रिकमेंडेशन है, for healthy people who do not have any cardiac or respiratory diseases, air purifier have virtually no role because they will not be able to close their room all the time and remain there, and there is no scientific evidence. However, those who have severe chronic respiratory diseases, जिनका ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम रहता है, या बहुत सीवियर एस्थमा है, या हार्ट फेलियर में है, वॉक नहीं कर सकते हैं, उनको मैं सोचता हूँ कि एयर प्यूरिफायर से फायदा होगा। क्योंकि मेरी एक थिंकिंग है साइंटिफिक, द लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस टू कॉन्ट्ररी, यानी कि क्योंकि हमने अभी उसका एविडेंस जनरेट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फायदा हो ही नहीं सकता। एविडेंस जनरेट करने में सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में। तो मैं कहूँगा कि जिनको बीमारियां हैं, जो एल्डरली हैं, जो घर में अफोर्ड कर सकते हैं, घर में जब एयर क्वालिटी बहुत खराब हो तो अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें HEPA फिल्टर होता है,
उसको अगर आप साफ नहीं करेंगे तो वो बीमारी का कारण भी बन सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसकी फिल्टर को चेंज करना, क्लीन करना, उसकी जो भी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर महाजन सर, आप बताइए कि यूसी हवा हर जगह तो हम नहीं बदल सकते, बट कैन वी डू समथिंग इनसाइड आवरसेल्व्स टू प्रोटेक्ट अस? सो प्लीज एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इन दिस polluted atmosphere. Very rightly said कि you can't change the air, but you can definitely change the air in your mind, because that is important. अपने दिमाग में जो हमने बहुत सारी भ्रांतियां रखी हुई हैं, या एक जो बहुत कॉमन चीज होती है जिसको एक्चुअली अभी भी खिलानी सर ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि लैक ऑफ एविडेंस डज नॉट मीन इट इज ऑफ नो वैल्यू, कि जब तक कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी, 100% नहीं होगी, तब तक हम नहीं करेंगे। पर अगर हम इसको अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी देखें या मेडिकली भी हम लोग देखते हैं, कोई छोटी मशीन होती है, वेंटिलेटर होता है, सब में हम छोटे छोटे फिल्टर्स लगाते हैं, तो क्या हमें लगता है सब कुछ साफ होता है? बट छोटे 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 जो हम चीजें उनमें ऐड करते हैं वो एक बेनिफिट ऐड ऑन करते जाते हैं। तो सिमिलरली आई वुड से हमें अपने लाइफ में भी छोटे छोटे बेनिफिट्स को ऐड ऑन करते जाना है, विच कैन स्टार्ट विद फर्स्ट योर ओन हेल्थ, विच वुड मीन कि आप अच्छा खाएं। अच्छा वुड नॉट डेफिनेटली मीन दिल्ली में रहते हुए अच्छा खाना मतलब चांदनी चौक का खाना नहीं है। डेफिनेटली अ हेल्थियर meal which means high on proteins and less on something which will add on charbी to all around the places where it should not be. तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हमारा मौसम और एक्यूआई इतना खराब ना हो तो इंडल्ज इनटू आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी अपनी रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करे, आपके रेस्पिरेटरी रिजर्व को भी इंप्रूव करे। एंड इन ए वे ये बहुत अगेन साइंटिफिकली शायद प्रूवन नहीं होगा, बट कुछ एक चीज डेफिनेटली हमारी अडेप्टेबिलिटी भी होती है। जब कोई चीज एकदम हार्श हो और हम बाहर निकलेंगे तो वी आर कंप्लीटली नॉट अडेप्टेड टू इट। इफ यू ग्रेजुअली start building our adaptability to something which is not so harsh, तो चीजें बेटर टॉलरेट कर लेता है हमारी बॉडी। वो एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंडली और क्या कर सकते हैं, ये अगर हम स्टार्ट करें घरों के अंदर, जो अब मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने टाइम पे याद करता हूँ जब मैं बच्चा था, से अराउंड 30 इयर्स बैक। वो छोटी छोटी चीजें जो हम घरों में देखा करते थे कि कैसे साफ सफाई का एक एकदम जैसे घर में वो होता था कि संडे हुआ या कुछ हुआ तो सब कुछ साफ होना बहुत जरूरी है, कपड़ों का बहुत जरूरी होता था, बिस्तर, चादरें, रजाई, कंबल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, उनको टू डू द करेक्ट वे। इट मे नॉट एग्जैक्टली बी द वे दैट वी वर डूइंग दैट टाइम। We now have facilities and means, we should utilize them and store them in a way where we do not end up multiplying more things within the house, जो indoor pollution की बात अगर करें तो। Thirdly, how can we reduce our own contribution to the pollution? That's very important. वो चाहे घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, whether it is in form of non-justified usage of resources जो हम करते हैं which increases the ambient temperature or the temperature outside, or whether it is something like शुरू में ही राजू साहब ने बोला कि भाई शेयरिंग व्हीकल टू गो टू द सेम एरिया एंड ऑल दैट, ये बहुत बात हो रही है। अभी शायद हम इसे बोल सकते हैं जो एंड माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे आके सब कोई अपनी सुविधा को देखने लगता है, और कोई इन छोटी जो बातें इतनी बड़ी तौर पे की जा रही हैं पर जिनको फॉलो करने में सब ये बोलते हैं अरे यार मेट्रो से चले तो जाएंगे, इस गर्मी में मेट्रो से वहां जाते जाते जान निकल जाती है आखिरी के 10 मिनट में। दिस मे हैव अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं बात करूं मेरे घर से मेट्रो अगर मेरे हॉस्पिटल के 10 मिनट तक रोकती है, या तो मैं एक ऑटो फिर भी कर रहा हूँ अकेले के लिए, या मैं वेट कर रहा हूँ कि 6-8 लोग उस ऑटो में बैठेंगे तब मैं बैठूं, तो मैं लग रहा है कि मैंने ऑटो का पॉल्यूशन एमिशन बढ़ा दिया क्योंकि उसके ऊपर एक्सेस लोड डाल दिया। सो देयर आर थिंग्स हैपनिंग एंड वी हैव टू बिट बाय बिट स्टार्ट एक्टिंग ऑन ईच पार्ट ऑफ इट। तो अपने से शुरू करें, अपने आसपास के बाद घर के वातावरण से शुरू करें, फिर घर के बाहर या कॉलोनी से शुरू करें। मेरे ख्याल से हर आदमी इस लेवल पे शुरू करता है तो अल्टीमेटली हम एक बहुत व्यापक स्तर पे इस पे सुधार ला सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत सुंदर बोलना। और खिलानी सर, आपसे 2 शब्द पूछना चाहूँगा कि डाइटरी क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट आते हैं जैसे विटामिन ई, लेवो कार्निटिन,
क्या इन सब को लेने से आपने देखा है कि पोल्यूशन लेवल से जो नुकसान शरीर के अंदर होता है वो किसी तरह से कम होता है? बिल्कुल इसलिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और ये जैसे डॉक्टर मिस्टर राजपूत ने बताया, शुरू में ही बताया, जो हरी सब्जियां, फ्रूट्स जो जनरल वो होते हैं, वो अच्छे होते हैं, जनरल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। को एयर पोल्यूशन को अफेक्ट करेंगे, ये आपकी परमिशन हो तो मैं एक मास्क के बारे में बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो समय खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज जी वेरी इंपॉर्टेंट। कि लोग सोचते हैं कि मास्क पहन के और हम वॉक करने गए तो हमें जो है ना एयर पोल्यूशन से बचाव हो जाएगा, तो ये जरूरी है बताना। और कुछ लोग नहीं यूज करते क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले ही जो है ना वॉकिंग में सांस फूलती है, तो मास्क जो है ना कैसे पहन सकते हैं। तो पहले तो ये बात है कि जो 3 प्लाई मास्क होता है या कपड़े का मास्क होता है, जिसको कहा गया कोविड में बहुत कारगर है, कि आप वो पहन के चलेंगे तो भी काफी है। तो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। ये ये तय है बिल्कुल। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारी इस तरह की रिसर्च हुई थी जो कभी नहीं हुई पहले। तो उन्होंने वृद्ध लोगों को मास्क पहन के वॉक कराया और उनका ऑक्सीजन चेक किया। ये पब्लिश स्टडी है, जामा में 1.5 साल पहले आई थी। और उसमें ये पता चला कि किसी का भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हुआ मास्क पहनने से। तो मास्क पहनने से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता, हालांकि घुटन या क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि अगर N95 मास्क पहनते हैं तो और भी दिक्कत होती है। और तो ये जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपको वॉक करना बहुत जरूरी है हैजार्डस टाइम में, तो आप K95 मास्क होता है, वो N95 से KN95 कहते हैं, वो मास्क मैं कहूंगा कि उसका कुछ बेनिफिट है एयर पॉल्यूशन से। ऑर्डिनरी मास्क का कोई वैल्यू नहीं है पॉल्यूशन से बचने, तो इतना ही बताना चाहता हूँ। बहुत थैंक यू सर, ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर ओझा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आप अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे वैक्सीनेशन के लिए? क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर खिलानी सर ने बताया, हमने चर्चा की कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ती हैं, अस्थमा भी बढ़ता है, ये सब भी बढ़ते हैं, निमोनिया बढ़ सकते हैं। सो इज इट एडवाइजेबल फॉर द एल्डरली स्पेशली एंड द हाई रिस्क पॉपुलेशन टू गो फॉर वैक्सीनेशन? कुछ बताएंगे इसके बारे में? बाय ऑल मींस यस, हमारी गाइडलाइंस में साफ है, नेशनल और इंटरनेशनल भी, कि निमोनिया के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो वैक्सीन हैं वो समय पे लिए जाएं। लाइक 65 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उनको निमोनिया का वैक्सीन लग जाना चाहिए। हर साल जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन साल में एक बार अक्टूबर सितंबर के महीने में लग जाना चाहिए, जो नए स्ट्रेन आते हैं WHO के हिसाब से। बिकॉज ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पॉल्यूशन से होने वाले जो दूषित इफेक्ट्स हैं उनको कुछ कम कर सकते हैं ये, और मोर्टेलिटी रेट उसमें काफी कम हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और उससे ज्यादा मैं एक चीज और बताऊंगा, एक चीज और जी जी बताना चाहूंगा, जी। तो थोड़ा सा अलग हुआ बाकी चीजों से, कि जागरूकता ही बचाव है इसकी सबसे ज्यादा। और जैसे अभी हमारे बाकी मित्रों ने कहा कि यदि हर व्यक्ति खुद से स्वयं से शुरू करे तो परिवर्तन जरूर आएगा, और हम एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. I think today's discussion was very interesting, and we have learned so much in this discussion. I personally have learned so much things which I did not know of before, even though I am a doctor and working for more than 2 decades. So I'm very thankful to all of you, our esteemed panelists, for being with us today. I would request Rajput sir to give a vote of thanks and conclude the session. And I would, before going over, I would request all of you to give a short, small message to our audience. ओझा सर, आपसे शुरू करेंगे, एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। सर, स्वयं से शुरुआत, जो हमेशा मैं कहता हूँ हर फील्ड में, हमें परिवर्तन यदि इच्छा है तो हमें वो इच्छा अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी और खुद से शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, एक बेबी स्टेप होता है सर। यदि कोई भी व्यक्ति एक बच्चे की तरह चलना जब शुरू करता है तो कोई गिरने नहीं देगा उसको, हर व्यक्ति सपोर्ट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अ बेबी स्टेप। हर व्यक्ति यदि शुरू करेगा तो मुझे लगता है हम अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर महाजन सर, would you your message to the audience?
Unmute yourself, sir. Mute पे आप. सॉरी, या जागरूकता सबसे पहला स्टेप होता है जी। जब तक आप किसी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक आप उसके बारे में अपने मन में जो भ्रांतियां हैं, उन पे काम करेंगे। अब जैसे आपने अपने इतने बड़े स्तर पे आपने इतने ओपनली कहा कि आपको आज कुछ नई जानकारी मिली, ये हम सभी को मिली है। जब हमारे सामने डॉक्टर खिलानी जैसे कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट बैठे होंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। बट हर लेवल, मतलब आप और हम जानते हैं, हम लोग कई बार सीएमईज में जाते हैं, कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता जिसमें एक नई बात ना पता चले। तो जागरूकता सबसे पहला स्टेप है, और डेफिनेटली जागरूक होने के बाद अपने से शुरुआत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू. खिलानी सर, व्हाट इज आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए? मैं ये कहूंगा कि संयम रखिए। जो पॉल्यूशन का कंट्रोल, हमारी जागरूकता जरूरी है। बहुत बड़ा रोल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी मेकर्स का। उनको इम्प्रेस करना चाहिए, और एसोचैम का उसमें जिम्मेदारी है। जब कभी पॉल्यूशन खराब हो, एक संयम रखें, क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, अपने आप को बचा के रखें। भीड़ भीड़ जहां भी होती है, जहां भी ट्रैफिक इंटरसेक्शन होता है, वहां पर अपनी गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल करें। आपके पास पेट्रोल के पैसे हो फिर भी ना करें। सबकी जिम्मेदारी के ये एक्शंस हैं जो आपको लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच. थैंक यू. Rajput sir, over to you. Thank you very much, Dr. Gesri. Thank you very much, Dr. Khilani. You've given us a lot to think, and I'm sure your words of wisdom have been well documented, picked up, and assimilated by all the participants who have joined us today. And we are really, from SHM, grateful to you for sparing your valuable time for us. Thank you, Dr. Mahajan, for coming and sharing your thoughts with our participants. And I'm sure they have benefited from your wisdom, and they have taken note of all that you have mentioned during the course of panel discussion. As you very correctly said, that awareness is one of the fundamental of any initiation of good future, and I'm sure SHM will continue to spread this awareness amongst the people as to what is good for them and promote illness to wellness. The whole idea of illness to wellness is that we create awareness amongst people how they should not fall sick and what preventive measures that they can take for their lives. So prevention is better than cure. That's the small message, and you very correctly mentioned that as your message to the audience. Dr. Oja, thank you very much for sharing with us your perspective, and very correctly mentioned that every small step is very important, and every person must start from himself. If they want to make a change, we should not think that whether the change made is very small and it will not impact the entire universe. In fact, there is a very old saying, "Boond boond se nadi bare, nadi nadi se sagar." So every drop counts in life, and therefore every person must be conscious of it and continue to do things which are right. And doctors have given you many cues which are very useful for all of us going forward. And lastly, but not the least, Dr. Khildani said, Jimmedari and Sanyam. These are two important words of wisdom which people have to take it. And I would also like to thank Dr. Kesri for conducting this program in such a manner, keeping all the audience very engaged, and to the team SHM for collecting such a wonderful panel who have given so much of wisdom to our participants. Thank you, and thank you very much. Thank you so much. Thank you.